Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ma'am, we'll just wait for students to join. I sent a reminder message also to them. Okay, sir. I don't know why it's 3 minutes actually. Nobody has joined today. Okay, now they're starting to join. Kanika, please switch on your video. Kanika and Shiv, please switch on your videos. We will start then. Okay, okay, wonderful. So we will start. Let the others join in the meantime. ठीक है, तो हम last time क्या बात कर रहे थे when we got cut out? We were talking about the better measure of dispersion, and we will study two measures of dispersion here. Okay, so one is called the variance. Okay, and one is called the standard deviation. ठीक है, तो जो real measure of dispersion है, right, and most of the questions are around that, is actually this standard deviation, which is denoted by the small sigma. Okay, small letter sigma. Now, but to understand that, first we have to understand the another measure of variance called the variance, which is actually the square of this term, right? So once we have found this, finding this is just taking a square root. Okay, and the interesting thing is this is actually doesn't have another symbol of its own. Variance is just written as sigma square. Okay, so these two are very tightly linked. Okay, let's look at what is variance. Okay, variance is the mean of the square of deviations. ठीक है, तो क्या कर रहे थे हमने क्या देखा था जब हम deviation निकालते हैं तो deviations are either positive or negative, but we are not interested in their sign. So what method did we use in mean deviation to overcome the sign problem? The mode. हमने मॉड्यूलस यूज कर लिया वहां पे, राइट? मॉड्यूलस या फिर
क्या बोलते हैं हम इसे, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। बट उसके साथ हमने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, और वो उनका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो नाउ द मेथड वी फाउंड टू ओवरकम दैट is to take the square, because if we take the square of positive is positive, square of negative is also positive. So this is also a way to convert the negative numbers to positive as well as retain the positive number as positive. What was done by the modulus sign we are trying to do with the square? Obviously we get different values, but we are able to overcome that problem. So what is variance? Variance is just the mean of a square of deviations rather than mean of absolute values. बस उतना फर्क है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं variance. Shiv and Saurabh, please switch on your camera. And Kanika, you are also not visible, beta. Okay, तो now variance for the raw data, variance कैसे निकालेंगे हम? raw data है तो डिविएशन निकाला x माइनस एक्स बार। हाँ, अब देखिए हमने मीन डिविएशन में क्या देखा था, मीन डिविएशन was around 3 वैल्यूज। आइदर मीन के अराउंड निकालने को पूछ सकते हैं, मीडियन के अराउंड निकालने को पूछ सकते हैं, या किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू के अराउंड निकालने को पूछ सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू, ठीक है, के अराउंड पूछ सकते हैं। बट द गुड पार्ट अबाउट द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डिविएशन इज दैट इट इज अराउंड मीन। तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, हमें ज्यादा नहीं सोचना है, हमेशा अराउंड मीन ही पूछते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है अराउंड मीन होता है। तो सॉरी, एंड सो इज वेरिएंस। नाउ अभी हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो वी फाइंड डिविएशंस अराउंड मीन, स्क्वायर इट, सम इट एंड टेक द एवरेज, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ वही चीज अगर हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में करेंगे तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जो है टोटल नंबर लिखते हैं, बिल्कुल सेम है। मीन निकालने का तरीका है, बट मीन किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस का, स्क्वायर ऑफ डिविएशन का मीन निकाल रहे हैं, उसी को हम वेरिएंस बोल रहे हैं, राइट। द ओनली डिफरेंस इज डिस्क्रीट में दिस इज द रियल वैल्यू, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ये क्या बन जाता है, क्लास मार्क। फॉर्मूला सेम है, तीनों केसेस में फॉर्मूला सेम है, दिस इज द गुड पार्ट। ओके, सो हमें बहुत सारे फॉर्मूले इस सेंस में याद नहीं करने, ठीक है। अब वेरिएंस अच्छा लग रहा है हमें, हमने स्क्वायर यूज कर लिया, स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, राइट। एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट डू वी गेट, यू हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन, 2x आता है, तो डिफरेंशिएबल है ये, जबकि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस एट x इज इक्वल टू 0, राइट। डिफरेंशिएबल नहीं होता है ये होता है। तो अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन एक इश्यू बचा। क्या इश्यू है, हमने क्या किया, xi माइनस एक्स बार किया, फिर उसका स्क्वायर ले लिया, राइट। मान लीजिए xi का यूनिट सेंटीमीटर्स है, x बार का भी यूनिट सेंटीमीटर है, सो इस टोटल का यूनिट कितना हो गया, सेंटीमीटर, फिर उसका स्क्वायर ले लिया, तो क्या यूनिट बन गया वेरिएंस का, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो जो वेरिएंस है वो हमें यूनिट उसका हो जाता है यूनिट स्क्वायर्ड। तो हम डिस्पर्शन को उसके स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमें एक अलग तरह की वैल्यू देता है, विच कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स।
right? And we can also not do things like add the dispersion to mean. We cannot add a centimeter square to centimeter. Again, we are stuck. So what is the solution we found to that? We said, let's take the square root of the variance we found. Okay, so this is a standard deviation. Standard deviation is nothing but the square root of variance. और ये चीज others are dropped out for some reason. Oh, what has happened? So, ma'am, I have stopped because others have dropped out. I'll just wait if they rejoin. Okay, sir. Kapil to wasn't in the class. Na? He is now coming in the class for the first time, right? Ma'am, Kapil नहीं था ना अभी तक class Yes, ma'am. Yes, sir. He is in 11th B, हाँ Commerce. हाँ he is coming now. Kapil, better switch on your camera. उसका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुआ अभी मैम, so he can't hear us. But sir, that day Ritesh joined us, na? He he is not a math student. हाँ, I don't know why, because वो ग्रुप एक ही है तो I think but they should Yes, sir. realize it's the class. In my message also I clearly mentioned maths. Yes, sir. Kapil, your audio is not connected. Can you hear me? Yeah, just a second. Mike, keep your camera on. Kapil, your audio is not connected. You are able to hear us? If you are able to hear me, raise your hand. Kapil? I think so. He's able. Hmm? So I think he's not able to hear you because it is not connected by audio. Yes, that's what I think. Kapil, can you hear me? If you can hear me, raise your hand. हेडफोन तो लगाया हुआ है उसने लेकिन इट्स But sir audio से connect नहीं किया. हाँ उसने वीडियो भी ऑफ कर लिया.
I think he's trying to connect to audio. I think he has a problem. So, okay. So, Mahi, what we were discussing was, I'll continue because there is no point waiting. Okay, we were discussing about variance. Okay, variance is represented by sigma square. And what is it? It is the mean of square of deviations. ठीक है ना, हमें डिविएशन निकालना आता है, उनको स्क्वायर करना है और उसका मीन निकालना है. और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. और वो याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है तो वेरिएंस को हम लिखते ही सिग्मा स्क्वायर है, तो वो कुछ हमें फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है. ओके, so he has raised his hand now, so okay. Now, ठीक है, तो now let's look at an alternate form, okay, of the standard deviation. तो standard deviation का formula तो simple है बिल्कुल, right? What is that formula? The formula for standard deviation is, पहले variance का लिख लेते हैं, उसका under root है, okay, 1 by total number of elements and the summation of fi into xi minus x bar whole square, right? इसी को expand करके लिखते हैं, we will see what we get. Okay, we will get fi under xi whole square plus x bar whole square minus 2xi into x bar, right? Let's split these terms out. fi xi square plus 1 sigma fi x bar whole square. But x bar is a constant, right? It's not changing with value of I. तो x bar को हम क्या करेंगे? We will put it outside the sigma because it's a constant, minus 2. Okay, again x bar is a constant, so I will keep that out. Sigma fi xi. Right? So now, what is this? ब्रैकेट खोल दिया है, प्लस okay. Now, Vishakha, beta, switch on your camera. बताइए what is this term? Tell me what is this term? Summation of fi by total number. सारी frequencies को ऐड किया तो total number ही आया, तो this term is 1. Now tell me what is this? Summation of xi's by n. What is this term? This is the formula for mean. तो ये x bar है, x bar पहले से था, तो ये minus 2x bar स्क्वायर हो गया, x bar स्क्वायर यहाँ है, तो
तो फाइनली आंसर क्या रह गया हमारे पास? समेशन fi xi square by n minus x bar. Okay, this is very interesting result. Why? Because what does this mean? It means mean of squares minus square of mean, right? Kapil, So better switch on your camera and this is mic. very Switch off your mic. okay. So variance is such a nice way to remember it. Mean of squares minus square of mean. Right? It's a very poetic way, just exchanging the words, mean of squares minus square of mean. This is what the variance is. And then the standard deviation will be just the square root of that. Mean of squares minus square of mean. Okay, so this is one alternative form of the formula. Okay. Okay. Now, in the same thing, right? We have just found this. Okay. What was that? We have found that Vishal, switch on your camera, beta, and Kapil also. okay. So there is another way of writing the same thing. I will not spend time manipulating it to come to this. You can try it at home. It's a very easy manipulation. I can write it as 1 by n. I am writing sigma now, not sigma square. You can also write sigma square. Okay, 1 by n into the summation of all the squares minus square of all the summations. Okay, so what is this? This is 1 by n. In the square root, we have n into summation of all the squares minus square of all the summations. Right? This looks rather complex, right? Why should we even use this formula? Isn't this a much neater, simpler formula? Actually, the benefit of this formula is that we can use, okay, this becomes a very, very useful formula when we use the shortcut method. That we will come to in a minute. Okay. तो वेरिएंस में आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस काफी बड़े हो जाते हैं. क्यों बहुत बड़े हो जाते हैं? यूजुअली क्योंकि स्क्वायर टर्म्स कैन बिकम वेरी बिग, राइट? मान लीजिए हमारे क्लास इंटरवल्स हैं 350 to 400, okay, then 400 to 450, ऐसे क्लास इंटरवल्स हैं. क्लास मार्क किया हुआ 375 हुआ, राइट, एंड 425 हुआ. इस तरह के क्लास मार्क्स हैं. सोचो इनका स्क्वायर, फिर उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना. वी विल बी डीलिंग विद ह्यूज नंबर्स. ओके, तो इसलिए ये फॉर्मूला इज ग्रेट फॉर स्मॉल नंबर्स.
Okay, and this formula we can convert into a shortcut method. Okay, and then this becomes very powerful for large numbers. Okay, this is a very easy formula. ये formula आपको याद करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन याद करना है. Okay, so let's come to the important part, which is the shortcut method. Okay, so I am left with only a few minutes, but I'll tell you what the shortcut method is. Okay, in the shortcut method, what do? It is similar to which method? Step deviation method. Okay, this is similar to the step deviation method. Step deviation method हम किस में यूज करते थे? Of finding mean. मीन में याद है आपको, क्लास 10 में आपने पढ़ा है स्टेप डिविएशन मेथड. आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट दिस इन द रिवीजन क्लासेस, राइट? तो ये जो है उसी मेथड का, यानी इसमें ये जो है h क्या है? ये कॉमन फैक्टर है या क्लास इंटरवल है. ओके, और a क्या है? एज्यूम्ड मीन. तो हमारा तब जो सिग्मा टर्म है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. सी यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट अगर आपको पहला फॉर्मूला याद है तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है. इसमें केवल xi की जगह yi लिख दिया गया है, और बाहर एक h टर्म जरूर आ रही है, वो याद रखिए, स्मॉल h इनटू h. उसमें भी करते हैं, यहां भी कर रहे हैं. वेरी सिमिलर मेथड्स ये, लेकिन याद रखना है. एक बार याद हो जाएगा तो लाइफ आसान है. Okay, this is a fabulous method. It makes your calculations a lot easier, a lot easier. Okay, और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जो फाइनल रिजल्ट है, ये देखिए फाइनल रिजल्ट है, इसमें ए कहीं है ही नहीं. एज्यूम्ड मीन, मीन के केस में हम ऐड करते थे ना वापस से, यहां पे वो है ही नहीं. तो एक्चुअली आप कोई भी एज्यूम्ड मीन लो, ये आंसर फाइनली सेम ही आता है. ओके, इसका मतलब क्या कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज डज नॉट चेंज व्हेन यू ऑफसेट योर डेटा. इसका मतलब ये होता है. ओके, बट इट स्केल्स व्हेन यू स्केल योर डेटा. उसमें आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है. द क्वेश्चंस विल नॉट बी अराउंड दैट थिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि रिजल्ट में ए नहीं है, केवल एच यूज होता है रिजल्ट. राइट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस विल बिकम वेरी क्लियर व्हेन आई विल डू न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई एम डन विद द थियरी. नाउ I will start with the numericals. Okay, we will do numericals from the chapter, and then all these things will become very, very clear. And sure, you attend those classes. Okay, we are coming to the end of the class now, right? But we will do this in the next class. Okay, that will be the that will be on Friday, right? So 1 or 2 classes we will complete this entirely. Okay, understood? Any doubts? Because then I'll end the class, because it's the time is over. You will have to go to the next class also. Any quick question you have on this? Because I won't revise this in the next class. We will directly go to questions. No? नहीं नहीं सर, गलती से हो गया होगा बेटा. आ गए सर. हाँ,
right? No questions? Okay, fair enough. So I'll end the class because the time is over. You will have to rush to the next class. We'll continue in the next class. Thank you very much. Bye-bye.